So we had a very divergent, interesting class last time. Did anybody get a chance to listen to it again? Yeah, Manvi, did you listen to it, darling? I did, but I can't talk about it. Can't about it. Mostly it was your daughter's questions, right? Where is she today? Busy? She's traveling with you. Okay. All right. Any thoughts? Any takeaways? Piyush, you said you will revise, right? I did, Didi. And while revising, I realized that one revision for the last class is not enough. Oh, uh, it was a very interesting and heavy class for me. Heavy in terms of there were a lot of learnings. And मैं actually अभी revise ही कर रहा था तो I think in a sum and substance we uh, uh, I would say that, you should always consider yourself imperfect. Be driven by the aspirations, not the desires. You told us the difference between aspiration and desires. And then aspire for a good purpose and be content with what is coming your way. So it's kind of, वो जो आपने दो द्वेष बताए थे कि don't be driven by jealousy, fear, desire, but yet be aspire to become the best, uh, is what my key takeaway was. But what I'm struggling is इसको achieve कैसे किया जाए, like कैसे हो कैसे सकता है ये, हम रह कैसे सकते हैं वैसे, वो थोड़ा सा आई मीन दो यू सेड कि इस लाइफ टाइम में वो मुश्किल है करना। आप जो डिजायर्स मांगोगे वो जरूर पूरी होंगी, अगर आपकी कामना भक्ति की है तो भक्ति मिल जाएगी, वो भी सह नहीं पाओगे। जब भक्ति मिलेगी तो बोलोगे ओ हमें कार क्यों नहीं मिली, हमें गृहस्थ क्यों नहीं मिला, और जब वो मिल जाएगा तो वो ये क्यों मिल गया वो। तो हम ही इस चक्करों में घूमते रहते हैं जिसकी वजह से मोक्ष नहीं मिलता। एंड लिविंग लाइफ विदाउट मेकिंग कर्म, विदाउट हैविंग थिंग, इज व्हाट विल अटेन आफ्टर लाइफ। ये सब समझ तो आ गया, पर पर उस रहना कैसे है उसको अचीव करने के लिए, वो नहीं सोच पा रहा हूं मैं, या आई एम नॉट एबल टू फिगर आउट हाउ टू लिव माय लाइफ। Very succinct recap of the last class. Excellent. Very nicely done. Very succinct recap of the last class. थैंक But यू। even if it takes a few iterations for you to get it, you got it. And you reproduced it very succinctly. Very nice. Excellent. अब कैसे करना है उसकी चर्चा अपन करते हैं. But very nice. Excellent. थैंक यू। Tanya, thoughts, Guria? You are, yeah, a little bit weak, but yes, you're audible. Actually, Piyush bhaiya ने बहुत अच्छे से explain कर दिया, but the gist and the biggest takeaway for me from previous class was that don't ask from God anything, because, or you should be very careful of what you are asking, because if you have a relationship with God, or if you keep God close to you, eventually God will give you the resources to fulfill your desire. And that was very deep. And of course, this is something which is at times like we give in to our desires and everything, but so you also summed up by saying that we have to give our 100%, like we have to aspire for that supreme perfection, but as long as we take it like that, we are doing it as a service to God. So shift all your desires and make it like, even if you want to be the best in whatever you want to do, just you condition yourself, and you, which eventually will come with, once you have that bhav and bhakti and you keep God close to you for everything, कि जो भी हम कर रहे हैं वो भगवान के लिए ही कर रहे हैं. So we can't shy away from hard work. We can't shy away from the fact that while we are here, we have to do our best. We have to show up with every situation that comes, and we have to do like everything with like to the, we have to do everything like how God would expect us to do. But don't
don't desire, or or don't desire for the outcomes, or don't put materialistic goals. Like, if you just do everything as a service of God, I think that is what was the biggest takeaway. And the whole idea that he said that भक्ति भी मांगो तो भी सोच के मांगो, तो बेस्ट है कि कुछ मांगो ही नहीं, जो है वो बहुत अच्छा है. और that was the biggest takeaway for me. Excellent. Monica, thoughts, Gudiya? Namaste, Didi. Namaste, Gudiya. My biggest takeaway from last time's class, which I resonated the most, was that be the best in what you aspire to be. Do not aim for CFO or CEO. Just be the founder, be the director, be the best. Be like the person. It's always about, the highest, the perfection that you seek. It is only then that you can achieve, going through life without getting touched by it, which was the next takeaway which I took. That you glide through it, but on such a high level, you give your 100,000% to be able to be the best at what you do. So that, if you aspire to be a founder or a director, it shouldn't like be cutting a sorry picture that you're not putting in the hard work, but you just are, there. So whether never aspire, first of all, for lower goals, lower hanging fruits, aspire to be the best. And the second takeaway was to glide through life without leaving a trace, without creating that karma, without, it's easier said than done, but somewhere I figured that it has to be done in such a nonchalant manner that, you just move on without, taking any kind of feedback. When I imposed it on me, that thought, I felt, take criticism and praise in the same vein, and never do things to please or to live up to someone's expectations, but aspire to be at that level, that peak of perfection, that pinnacle, so that you're anyway, and I'm not saying it in a boastful manner, that you've risen above that, that base level. You've come to that level where it stops even bothering you how people are interpreting a reaction or any work, any task, or any accomplishment. It should not even matter, because then you've moved on to the next one. And it's not even there anymore. It's like wo that aane wala pal na jaane wala hai. It's like literally, I really, I listened and then I interpreted it in my own way. Mhm. And I was like, it's so fleeting. It doesn't even matter, because what's been done, in any case, you cannot control it, good, bad, or ugly. Let people be the judge of that. And you're anyway striving for a higher goal, this is just a stepping stone to that achievement, So that was my takeaway. I don't know if I made any sense, but yeah, that was my takeaway. Fine, whatever. See, when you are listening to philosophy, it's very hard to hold on to tangibles. So whatever stuck, that's fine. Absolutely fine. Very nice. खुशबू, क्या किया तूने बालों के साथ? नमस्ते दीदी. कुछ नहीं, शैम्पू किया दीदी. Shampoo. All right. Nice. Any thoughts, beta? Yes, Didi. I think last class I have heard every day. Every day. So yeah, I was listening to this last class every day, and my takeaway was जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है, जो है वो पर्याप्त है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा. And don't react, respond. Have a relationship with God and be in non-action in everything that you do. Be in the service of God, and always keep your why strong. After listening to this whole class again and again, and like I've realized, I've come to certain conclusions, and I have certain questions, and which Piyush Bhaiya also asked very aptly, कि कैसे करें? Desires nahi hone. Like I have realized in past 2 years with you that all my little things have dissipated, because
I'm no more, those things doesn't bother me. But the central things which are important to me, I feel मेरी लाइफ में और challenges उन areas में बढ़ गए हैं. और आप कहते हैं ना कि जितनी साधना करोगे उतने कर्म जलेंगे, उतनी प्रॉब्लम्स फेस करोगे, तो वो सारे हो रहे हैं मेरे साथ. एंड आई जस्ट वांट टू नो कि कैसे अपने आप को उतना सक्षम बनाए कि रिएक्ट ना करे. जैसे बाकी चीजें अब मैटर नहीं करती, लाइक अब स्टाफ नहीं रहता, हाँ, तो आई डोंट क्रिब, आई वर्क. I don't like really tell even think for a second that I have to work, be it kitchen, be it house, be it anywhere. Every work happens, but when things where I am deeply attached and if those things go haywire, तो उसमें अभी हम कैसे ये वाला स्टेट ला सकते हैं? क्योंकि उसमें तो हम मेरे को लगता है मैं कुछ खुद के हाथ से तो नहीं कर सकती, तो अभी इसमें तो दिमाग में काम करना है. तो हाउ टू वर्क ऑन द माइंड? We'll talk about it. All right. Excellent. Nicely done. Good you listen to it every day. Neha, beta, busy? बात है. एक सेकंड. हाँ. So sorry, वो मेरे साथ बेबी है, वो he is also watching this thing. So I don't know if I think there's something else going on. There's a lot of noise. Okay. That's okay. No worries. Pulkit, any thoughts, beta? Namaste. Sorry, I couldn't put on my video, but yes, I do have learnings. Most of the things everyone covered, but desires, I think, in my opinion, it always comes when we compare ourselves to our past and our future. That's the thing. We are never in our present. We are never thankful in gratitude. We are not in gratitude of what we are getting right now. Now that I think of, I always repeat the situation, but after summer, I have come out stronger. And now that I think of, I regret that rather than crying and fretting and messaging you, I could have learned more dishes. I would have learned more stuff in India, you know. Um, Rather than just thinking about embassy, I had 3 months, but the like passport just took 1 month. But other 2 months, I could have made it more productive and stuff. I'm really thankful because like if I don't understand what you say, God teaches me with a twisted turn with a really hard situation. Which I'm thankful for. Nowadays, after that situation, whenever something happens, train cancels, flight cancels, I'm like laughing about it because I'm like, okay, at least train has cancelled, but my passport is safe, so I'm I'm thankful. Like at least something is safe. At least I'm safe. What if something could have happened to me and all that stuff? So I'm really grateful that God puts us in situations that makes us learn a lot. Maybe not that time, but after that, you're really, really, really thankful. Nowadays, also in college, if I'm fighting with a friend or if something is happening, if I'm not having the best days, I'm like, it's fine. I'm gonna learn a lot. Also, you were talking about Sudha Murthy ji, and I've seen a lot of interviews by her. She's a really simple person, and it's really inspiring because getting that much money, I would have bought a lot of cars and that show off stuff, materialistic stuff. But it's really hard. She was talking in her interview that she was going to her first business class flight, and then they were like, economy people should go back, but she was actually going for the business. That's how simple she dresses, that she like people don't even know, like she doesn't show how much written like money, materialistic things she has. And it's really it's a huge inspiration to see a person like that too. So I also saw her. And that's it. Nice. Shivangi, thoughts, beta? You're traveling, I hear. Hello. Namaste, Didi. Namaste, Gudi. So, I am traveling, but I'm just gonna join the class for as long as possible, and then I have to go out again. Okay. From last class,
I feel like something that I really again resonated with was that, you know, karm karo, but karm ki matlab phal ki chinta mat karo. And to just like do the whatever we're supposed to do our work, and not expect anything in return, and leave that up to God. I think that was really important for me, that and also that we should try to see God in everything that we do, and choose I mean, to basically see God in all the things. Excellent. Hina, any thoughts, beta? नमस्ते दीदी Namaste, Gudiya. कैसे आप एक्चुअली आई एम ड्राइविंग एंड आई रियली मिस माय बुक क्योंकि लास्ट वीक बहुत अच्छा था देयर वर लाइक सो मेनी गोल्ड नगेट्स दैट आई हैड रिटन डाउन one thing that really strikes for me is just to be content. आपने बोला था कि don't attach emotion to anything that's happening. ये मत बोलो कि ये अच्छा है या ये बुरा है. Just to, you know, be centered and not be affected, and to take things on face value while not getting affected is probably one of the things that we need to master in life. And probably I'm constantly trying to keep a check on myself regarding this. So Lovely. That's awesome. it was a very helpful lesson. That needs to be repeated again and again and again and again and again. I mean, एकदम आसानी से नहीं आता. I'm telling you, एक दिन कर लूंगी, फिर दूसरे दिन मैं भूल जाऊंगी. But it's just your constant reminders that need to be with yourself, right? That's true. So Till I it wish I becomes a had my way. book. I would have gone on and on, but yeah, this is one thing that really strikes out for me. Excellent, beta. Excellent. That's all that's all that you've taken away. That's all that stayed. That's all that's important. Ji. Thank you, Devi. Thank you, Gudiya. So, well, the basic question, when it comes to desire, there is a problem, right? And if you're content, then how come there is desire? And if there is desire, then how is contentment possible? Isn't that the basic question? Because you can keep going round and round in circles. Like if you never wanted a job because you were content, then, you know, it's much easier, right? But now that you want a job, you need to want the best, and you need to do the best, and you need to. So that's where the loop is breaking, right? Is that not where it is becoming a problem? Tanya and Piyush stated that there is a problem. They thought about it, and then there is this fundamental problem, and even Khushbu hinted towards the fundamental issue there. Right? If I never aspire, then I will always be content. And if I'm always content, there is no desire and there is no aspiration. Both of those things go in tandem. Yes? And that is where the problem lies? Yeah? So I take whatever is in my hands and see if I am using it optimally. So, for example, I have a bachelor's degree in something and a master's degree in something and experience of something at a certain stage of life, right? Is it being utilized 100%? There are children and family that I'm responsible for. Am I doing my 100% for them? Right? If everything is God,
तो सेवा तो सबकी बराबर होनी चाहिए। हो रही है क्या? सो अगर आपको इस डिजायर में दिक्कत आती है and it becomes a stumbling block that how can I have desire and contentment at the same time. I think Hina put it very nicely. She said, okay, be content. या शिवांगी said, कर्म करो फल की चिंता मत करो। जितना हमारे पास है उसको लेके और कोशिश करो उसका बेस्ट वैल्यू मिले, राइट? जो भी हमारे पास मर्चेंडाइज है, किसने दिए? राम ने दिए। और किसके लिए? राम के लिए। जाओ और उसका बेस्ट भाव लेके आओ बाजार से। इसको करने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। होनी चाहिए क्या? Whatever is your merchandise, sometimes you're professional, so your merchandise is your education, your experience, etc. Go and get the best value for it. And you do that not because your colleague is getting more money or your classmate is getting more money, or at this stage in life people should be making this much money. So don't bring in comparisons when you're doing that. You do your very best. Try and do your absolute best. And then whatever you get, whatever assignment you get, you work very hard on. And then you get more value, create more value. कोई भी चीज मिले उसको अच्छा करके छोड़ो, गंदा करके मत छोड़ो। होटल में भी जाओ तो रूम जैसा मिला था उससे ज्यादा अच्छा छोड़ो, गंदा करके मत जाओ कोई भी जगह। और अगर अच्छा नहीं छोड़ सकते, कम से कम वैसा छोड़ो कि उसमें पता ना चले कि तुम आए और गए। अगर हर जगह में यही एटीट्यूड रहेगा तो हर जगह में आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, ये अचीव करने के लिए कि आए भी गए भी किसी को पता भी नहीं चला। Does that make sense? Everybody with me? If you can make things better, make them better. If you can make things, if you can't make things better, at least leave them the way they, leave them untouched. Because of you, no depreciation in anything should happen. Only appreciation should happen. No matter where you go, no matter what you do. And nothing should be prompted because of a comparison. Always best value for your merchandise. And it doesn't mean that you have to like dress down in any which way. Every day dress up to meet Krishna. In any which way, nobody is asking you to dress down. अब अगर आपको मालूम है कि भगवान को ऐसा पसंद है रूप, तो वैसा बना लो। अब सुधा मूर्ति को पता होगा कि उस कॉटन साड़ी भगवान को पसंद है, तो छोड़ती नहीं है उसको। उसको पता होगा भगवान को ऐसे प्रपंच करना पसंद नहीं है, तो इसलिए वो वैसे प्रपंच नहीं करती। मगर हमारे भगवान जो है ना, बड़े फ्लेक्सिबल है ना? हर किसी के ऊपर दया करते हैं। जिन जिस भगवान का चरित्र हम देख रहे हैं, भगवान बड़े फ्लेक्सिबल है।
चाहे राम जी हो, चाहे शिव जी हो, चाहे हनुमान जी हो, बड़े फ्लेक्सिबल हैं, बड़े भोले हैं। इनका चरित्र बड़ा फ्लेक्सिबल है। हनुमान जी गए, रावण को भी प्रभु बोल रहे हैं, क्योंकि उनको प्रभु ही दिखते हैं सारे। राम जी भेदभाव नहीं करते किसी से। शबरी के भी बेर वैसे ही खाते हैं जैसे कौशल्या माता का खाना खाते हैं। तो हमारे भगवान बड़े फ्लेक्सिबल हैं। इसलिए आपको भगवान के साथ जो रिलेशनशिप बनानी हो ना, आप बना लो। अगर आपको रास करने के लिए राधा बनना हो तो आप राधा बन जाओ, और अगर आपको विदुर का भेष धारण करना हो प्लेन सिंपल, तो वो विदुर बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान सबसे प्यार करते हैं। इन एनी विच वे, बीइंग one way or the other, careful and simple or extravagant or opulent, it doesn't make any difference to God. You can live it up however you want. God will still love you. Does that make sense to you guys? आप अपना भाव बदल लो और फिर अपना रहन सहन उसी हिसाब से कर लो, पर जो भी करो उसको you have to live it up to that. अगर सिंपल करना है तो सारे टाइम सिंपल रहो, क्योंकि भगवान को तो सादगी पसंद है, तो बिल्कुल सही है, आप सादे रहो। और जो द्वारकाधीश को या राजा राम को आप एड्रेस कर रहे हो रोज और देख रहे हो रोज, तो तैयार होके जाओ। किसने मना किया है? मनाही कुछ नहीं है, डूज एंड डोंट्स नहीं है कहीं भी। द बेस्ट पार्ट अबाउट सनातन धर्म के रावण को भी मोक्ष मिला, है ना? रावण को भी मोक्ष मिला, और लक्ष्मण जी को भगवान ने मृत्यु दंड दिया। तो ऐसा नहीं है कि तुम दूसरी तरफ खड़े होगे तो कुछ और मिलेगा और इस तरफ खड़े होगे तो कुछ और मिलेगा। सो दोनों को भगवान ने ही मृत्यु दी। रावण को भी भगवान ने मृत्यु दी, लक्ष्मण जी को भी भगवान ने मृत्यु दी। कैन यू बिलीव दैट? भेदभाव नहीं है कोई, तुम्हें जैसा मन करे वैसे भगवान को अप्रोच करो। Difficult to wrap your head around it? Difficult to wrap your head around it? There is no one way in which you need to approach life. Judgment life में है ही नहीं. Remember that. अच्छा बुरा कुछ है ही नहीं, सही गलत कुछ है ही नहीं। तुम मरा मरा करके जाओ तो भी राम ही मिलेंगे। सरेंडर होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। Be true to whatever role you've chosen to do. Be true to it. 110% be true to it. Whatever role you choose. One role is better than the other is not true. All are absolutely fine. All should be in dedication to God. That is one thing. One thing that has to be common. Does that make sense? Nobody is telling you to not buy the cars. Buy the cars. Live your opulent best. It's not that God will in any which way reject you because you are externalizing your material gains. Or you can live simply, not show off at all. That is also fine. God does not differentiate between loving these two kinds of individuals. If the motive is to please God in both senses. See, you understand what I'm saying? In both cases, your objective should be to be with God.
रावण ने सब कुछ किया, कुबेर से भी लड़ाई कर ली, सारा सोना लेके लंका चला गया, उसमें भी उसको पूरा नहीं हुआ। उसके बाद लक्ष्मी स्वरूप सीता माता को भी हाथ पकड़ के ले गया। Be true to it. Whatever you're doing, do the very best. Then don't be content with an oddie. जो भी तुम कर रहे हो, अगर दान कर रहे हो तो पूरा दान करो, और अगर दिखावा कर रहे हो तो वो भी 110% पूरा करो, और भगवान को उसका ऑब्जेक्टिव बनाओ। अगर तुम श्रृंगार कर रहे हो तो श्रृंगार भी 110% होना चाहिए। And if you're dressing down, dress down completely. हाफ वे कॉटन की साड़ी भी क्यों पहन रहे हो? जैन मुनि बन जाओ। And again, if you want to be halfway, that is also fine, because there is some role, some character in God's life which who was halfway, like Sugriv, yeah, halfway, आधा भगवान के साथ, आधा भगवान के साथ नहीं, भूल जाता है बीच बीच में। वानर बुद्धि है ना, भूल जाता है। हमारी भी वानर बुद्धि है, हम कभी कभी भूल जाते हैं ऐसा रहना चाहिए, फिर थोड़ा सा बदल जाते हैं, फिर भगवान को थोड़ी देर छोड़ देते हैं, फिर भगवान हमें वापस दिलाते हैं याद, जैसे अभी पुलकित ने बोला कि वापस भगवान याद दिलाते हैं, फिर छोड़ देते हैं हम भगवान को, फिर भगवान वापस याद दिलाते हैं। ये भी सही है। कोई जज नहीं कर रहा, कोई बोल नहीं रहा ये सही बात है ये गलत बात है। कोई, मैंने कभी भी किसी क्लास में ये नहीं बोला कि तुम पैसे कमाओ या मत कमाओ, खर्च करो या मत करो, अच्छे से तैयार हो कि सिंपल तैयार हो। Have I ever said anything about any of these things in any of my classes? For those of you who attend many classes also, or if you attend one class also. However you choose to meet God is completely your decision. It would be awesome if you could stick to that path. And it is absolutely fine if you keep wavering also. हाँ बेटा। दीदी, तो इज इट correct to say that there is no right or wrong path if you have chosen that path in your head to reach God? So, हम for सनातन example, धर्म में, हम सनातन धर्म में बेटा, कोई भी पाथ वहीं तक पहुंचाएगा। नहीं तो दीदी, मैं जो एग्जाम्पल कह रहा था कि एक जैसे भक्ति का या सिंपल लिविंग का रास्ता हो गया, और दूसरा रास्ता, मैं दूसरे धर्म का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, टेररिज्म, विच इज अ वेरी एक्सट्रीम एग्जाम्पल मे बी, बट दे ऑल्सो किल innocent people, but in the name of God. They feel that this is important to establish their religion, and I'm not trying to sort of demean any religion, but I'm just trying to see a very too extreme path, and what we are discussing, it appears even this बेटा path is वहां right. तक जाने की क्या जरूरत है, हमने धर्म भी बदलनी। आप अपने ही शास्त्र में से देखो ना, हिरण्यकश्यप नहीं हुआ क्या? उसने क्या बोला? जो मेरी पूजा नहीं करेगा मैं उसको मार दूंगा, जो मेरे धर्म का पालन नहीं करेगा मैं उसको मार दूंगा, मेरे बेटे को भी मारने को तैयार। इसमें हम्म हमें हम्म कहीं किसी और धर्म के पास जाने की जरूरत नहीं बेटा, हमारे अपने सनातन धर्म की कहानी है। कोई हम्म किसी भी रास्ते से जाए, भगवान उसको मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि एंड में कुछ और है ही नहीं। भगवान से है, भगवान के पास ही जाएंगे ना। हम्म हिरण्यकश्यप को भी भगवान मिले ना, किस रूप में हम्म भगवान मिलेंगे ये हो सकता है थोड़ा सा। आप कोई भी कैसे भी इसको करो, देर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट बेटा, that no matter what path you choose, you are only going to God. Slowly and steadily, your destination is there only. If you stick to one path, हिरण्यकश्यप, कहानी क्या है कि जय और अजय, जय और विजय भगवान के दो संतरी थे, विष्णु भगवान के दो संतरी थे, और उनको श्राप मिला कि
आपको भगवान की का संतरी बनना नहीं आता, आप मृत्यु लोक में जाओ, पहले भगवान को आप समझ लो कि आप कहाँ हो, आपको आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको यहाँ पर समझ नहीं है, आप जाओ मृत्यु लोक में जाओ। मृत्यु लोक मतलब ये हमारा संसार, संसार में जाओ। और जब तक ये समझ ना आए कि भगवान क्या है और यहाँ पर रहने की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, तो तुम यहाँ पर वापस मत आओ। भगवान ने, नारायण ने बोला कि तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो मेरे भक्त बनके 100 बार जीवन मृत्यु जीवन मृत्यु मेरे भक्त बनके और फिर मेरे पास वापस आ जाओ, या मेरे दुश्मन बनके 3 बार में वापस आ जाओ। हम ना भक्त बन पाते हैं तो 100 बार में भी नहीं वापस जाते, ना दुश्मन बन पाते हैं तो 3 बार में तो जाने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, दुश्मन तो हम बन ही नहीं सकते, हमारी पास पॉसिबिलिटी नहीं है। तो हम बीच में आधे भक्त बन के अटक जाते हैं। नॉट सेइंग अगेन देयर इज नो जजमेंट बेटा। हम क्यों जज कर रहे हैं कि वो अपना रास्ता सही है, कि हमारा रास्ता सही है, कि इसका रास्ता सही है, जो वेजिटेरियन खा रहा है वो सही है, जो जैन खा रहा है वो सही है, जो नॉनवेज खा रहा है वो सही है। इतना क्या जजमेंट करना है, सब सही है। अगर भगवान ने किसी को बनाया तो गलत तो बनाया ही नहीं, सभी सही। जब हम घड़ी देखते हैं तो सारे टाइम कोई फुल आवर तो नहीं होता ना, कभी 1 मिनट, कभी 2 मिनट, कभी 3 मिनट, कभी 4 मिनट, कभी 15 मिनट, कभी आधा घंटा। सो हम सारे ये फ्रैक्शंस में ही है। और ये समय चक्र बोलते हैं ना, इसमें ये सारे फ्रैक्शन मिलके बनता है। और किसी ये आप बोल सकते हो कि 1 बज के 3 मिनट 1 बज के 15 मिनट से गलत है? कैन यू से दैट? इज इट रॉन्ग टू बी 1.03 instead of 1.15 or 1.45? It's not, it's all fine. See, the biggest problem I have, and not only I, we have as a collective group society, is this whole judgment that we have कि ये सही है और ये गलत है, ये अच्छा है और ये बुरा है। पासपोर्ट खो गया तो ये बुरा है, हम उसमें अच्छा देख ही नहीं पा रहे। ट्रेन मिस हो गई तो ये बुरा है, हम उसमें अच्छा देख ही नहीं पा रहे हैं। जॉब नहीं मिला तो ये बुरा है, हम उसमें अच्छा देख ही नहीं पा रहे। ये इस कहीं पे कुछ भी बुरा नहीं है, कोई कोर्स ऑफ एक्शन बुरा नहीं। भगवान ने सबको बनाया है और सब सही है। कोई जजमेंट करना हमें जरूरी नहीं है। मेरी पिछली क्लास का मतलब अगर कोई ये ले कि हमें 2000 से ऊपर का कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, तो मेरी क्लास फेल हो गई। ये मतलब मत लेना बेटा, मेरा मतलब ये नहीं था। ये सारे टाइम इकोनॉमी में ट्रैवल करना चाहिए, मेरा मतलब ये भी नहीं था। मगर इतने सक्षम बनो कि सारे टाइम फर्स्ट क्लास अफोर्ड कर सको। उसके लिए अगर माता सीता को छीन के भी लेके जाना पड़े, खींच के, तो लेके जाओ। बनो सक्षम, करो, प्ले योर रोल आउट, whatever it is, that you don't even have to look at any class for that. Whatever you have decided is your path is fine, and you will reach God there only, for as long as you continue to carry him with you every step of the way. Offer everything that you have to him, make him responsible, and you can get through life. It doesn't matter whether you're living simply or not. It doesn't matter if you're eating in five-star restaurants or the best of food joint. Maybe food is your way.
तुम बोलते हो ना कि आपको लेके चलेंगे इस रेस्टोरेंट में, ये बहुत अच्छा है, इससे भी ज्यादा अच्छा भगवान को ले जाओ अपने साथ, और भी अच्छा है, बिल ही नहीं आएगा खाने का, सिर्फ अपना खाने का बिल पे करके आ जाना वापस, लेके जाओ भगवान को सारे टाइम। So maybe I'm not articulate enough to explain this as much as I'm feeling that I need to. But there is nothing wrong in the world. There is no one path that is wrong. I'm not indicating that you choose a path that is right. That is not my job. You choose whatever you want to choose based on whoever you are, based on whatever God made you. Like Monica is a wonderful daughter. Yeah, beautiful daughter. But she keeps sabotaging herself only as a daughter. Piyush is a wonderful father, and he keeps sabotaging himself only as a father. You decide what you want to be. Good daughter, good father, or not. And then follow that path. ये हाफ हार्टेड काम क्यों कर रहे हैं? Does that make sense? You decide. Don't do one or the other. Do one completely. अगर माँ बाप से लड़ना है तो फिर ठीक से लड़ाई करो, कोई दिक्कत नहीं है, लड़ाई कर लो, प्रहलाद की तरह से लड़ लो। बहुत सारे माँ बाप है इस दुनिया में जो बच्चों को सिखाते, बेटा जाओ मार के आओ किसी को। लड़ना झगड़ना अगर सिखाना है तो सिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक से सिखाओ। जो भी सिखा रहे हो ठीक से सिखा दो, जो भी कर रहे हो ठीक से करो। ये एक बोट में एक तरफ पाओ और दूसरी बोट में दूसरी तरफ, ये दिक्कत है। और अगर ये है भी, अगेन ये दिक्कत है भी, ये मैं जरूर बोलूंगी कि पूरी तरह से जियो, 110% जियो, हमेशा बोलती हूँ मैं। मगर अगर तुम्हारी प्रॉब्लम ही ये है कि तुम हमेशा फ्रैक्शन में ही रहते हो, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट टेक्स लॉन्गर। We're all going to the same place. Continue to try. Continue to aspire. There is no judgment in that also. Does that make sense? Everybody with me? I will again urge you to drop the judgment. There is no right path. But when you choose your path, please stick to it. That is something that I would sincerely urge you to do. तान्या ने बोला योगा करना है दीदी, योगा कर लिया इसने पूरा ठीक से। फिर बोला काम करना है, फिर काम कर लिया ठीक से? नहीं। तो बेटा करना क्या है? और अगर यही दो चीजें बैलेंस करनी है तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इट विल जस्ट टेक लॉन्गर बिकॉज यू वुडंट हैव अचीव्ड एनीथिंग। यू आर अ फ्रैक्शन इन बोथ एरियाज। हाँ बेटा। Really sorry, I'm asking so many questions, but actually I was referring to the Gita notes also, and I just wanted to clarify जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं, आपने गीता की क्लास में भी एक चीज बोली थी कि स्वधर्म की परिभाषा तय कर लो, और जब वो तय कर लो तो उसको एज ए ड्यूटी फॉलो करो। और उसमें मैं उस क्लास में भी, मुझे याद है वो एग्जांपल, वही मैंने सवाल पूछा था कि टेररिस्ट किलिंग एनीवन, इज दैट आल्सो अ स्वधर्म? एंड आपने बोला था हाँ, वो ही चोजन दैट पाथ। सो इज इट द सेम थिंग? मतलब धर्म और अधर्म अलग चीज है, बट पहले स्वधर्म तय करो, उसकी परिभाषा अपने लिए तय करो, और वो शायद टाइम के साथ चेंज होती रहेगी, बट अगर वो तय हो गई है तो उसको एज ए ड्यूटी फॉलो करो, पूरी शिद्दत के साथ फॉलो। इज दैट व्हाट वी आर स्टडीइंग हियर आल्सो? You have some thoughts, Monica? You're laughing.
सॉरी मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ. No, I found it interesting because I think I had mentioned that example of terrorist in the last class. Sorry, Piyush, for being so ruthless with my examples, but I think the most drastic thing stays with me. But see, from what I have interpreted this, you brought in a thing that they use the name of jihad and they conduct terrorism. First of all, that is not dharma. That is a belief. It's a movement. It's a cult. Okay. So please don't confuse it with dharma and adharma. Dharma here, when Didi says it's Sanatan Dharma, that's actually a religion. That is dharma. You see, I don't know if I'm saying the right thing or not, but can you see the difference between the two? Like, terrorism is not it's not a dharma. It could be a karma. It could be your path that you've chosen in life to follow, but it is not, but doing it well is your dharma. Okay, that is your karma. I don't know if I'm making any sense here, but this is what my understanding of this is. That is karma. And It to is do your karma, sorry. you're Okay. absolutely right, but even then, I will not even propagate Sanatan Dharma as dharma. भाई तुम कुछ भी डिसाइड कर लो, आज से डिसाइड कर लो भगवान को चप्पल मारनी है तो चप्पल मार लो. Exactly, that's what I'm getting आज at. से डिसाइड कर लो कि सारे हिंदुओं को का खून करना है तो खून कर लो. डिसाइड पीछे मत जाना उसमें. एक काम करो और उसको ठीक से कर लो पूरा. परशुराम जी ने एक बार नहीं 16 बार, So, 16, 17 times he emptied the entire world of Kshatriyas. So no big deal यार. हमें किसी दूसरे धर्म पे जाने की जरूरत ही नहीं है. We should not even make it controversial like that. We have enough examples in our own stories. Don't even make it controversial. उनको ठीक लगा, उन्होंने वैसे कर दिया. Does that make sense? Right, but I was not trying to differentiate between dharma and adharma. I was just seeking a confirmation that actually सेम ही चीज है. should, हाँ, same ही चीज है. Exactly, exactly. स्वधर्म आपने जो भी डिसाइड कर लिया. आपने डिसाइड किया कि रोज भगवान को 4 किलो मीट खिलाऊंगा, तो 4 किलो मीट खिला लो, रोज खिलाओ. जो भी आपने डिसाइड कर लिया कि ये depending on who I am, this is what I want to do, this is who I want to be, this is how I want to make my offering to God, whatever it may be, is absolutely fine. ना हम इस्लाम प्रोपोगेट कर रहे हैं, ना हम सनातन प्रोपोगेट कर रहे हैं. मैं तो सिर्फ इतना बता रही हूँ कि तुमने जो भी डिसाइड कर लिया है वो ठीक है. ये मत सोचो कि ये अच्छा है और ये बुरा है. इसमें ये नहीं आता कि छोटी गाड़ी में जाना चाहिए कि पैदल जाना चाहिए कि नंगे पांव जाना चाहिए कि योगा करना चाहिए कि कम खाना खाना चाहिए कि ज्यादा खाना खाना चाहिए. भाई मैंने तो कुछ भी नहीं बोला. हम बोल सकते हैं कि हेल्थ के हिसाब से कम खाना खाना चाहिए. डिजायर्स मल्टीप्लाई ना हो इसके लिए कम कम में जियो, तो इसलिए डिजायर मल्टीप्लाई नहीं होंगी आपकी, क्योंकि अंत ही नहीं है दूसरी तरफ का. तो जो हमारी संस्कृति जो हमें सिखाती है, छोड़ दो सनातन धर्म भी छोड़ दो, ये धर्म और इसका आर्ग्यूमेंट ही नहीं है. हमारे संस्कार जो हमें सिखाते हैं, क्या सिखाते हैं? कम कम. क्यों? कि ज्यादा करोगे तो ज्यादा का तो एंड नहीं है, कम का तो एंड है ना. तो इसलिए हमारे संस्कारों ने हमें बताया कि कम कर लो, क्योंकि उस तरफ जाओगे तो उसकी सीमा नहीं है कोई. 2000 की कॉटन साड़ी तो सीमा हो गई ना एक, कम हो गई. वो सीमा है, एक सीमाबद्ध है. महंगी साड़ी की कोई सीमा है क्या? तो वो पूरा करते 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 आप कहाँ तक जाओगे? जैसे रावण गया ना फिर.
वन में भगवान से सीता को भी चुराने गया, क्योंकि उसका एंड ही नहीं है कोई। लक्ष्मी जी का क्या एंड है? इसलिए हमारे संस्कार हमें बोलते हैं कि भाई ऐसा करो जो मापदंड हो जिसमें, और वो मेजरेबल हो, और उसको तुम पूरा कर पाओ। वो हमारा संस्कार बोलता है, जजमेंट उसमें भी नहीं है। तुम सबसे महंगी गाड़ी खरीद लोगे, उसके बाद रॉकेट आ जाएगा, स्पेस में जाओ, तो ना दोनों लड़ रहे हैं कौन स्पेस में पहले जाएगा। एंड क्या है इसका? एंड अगेन, देयर इज नो जजमेंट, प्लीज डू इट। They can afford to do it, they will do it. That's their fight to fight. Since you are not going to be able to get there so quickly, better to have those measured benchmarks. You achieve the same result without having to prove yourself that level. देखो, रावण कौन बन सकता है? ये तो हर किसी के बस की बात है रावण बनना। और ये नहीं बोल रही हूँ कि ऑपुलेंस का एग्जांपल रावण है, ये बिल्कुल इसका मेरा गलत मतलब मत समझना। आई एम नॉट सेइंग दैट जस्ट बिकॉज़ यू आर लाइक लिविंग इट अप, यू आर नॉट रावण बिकॉज़ ऑफ दैट, राइट? डोंट टेक इट लाइक दैट। The idea is whatever you have decided, you do it. Nobody is going to question you. There is nobody else. You are only with yourself. This body and you are your best friends. This mind body construct and you, two of you, always there. You only have to be true to yourself. The two of you, between the two of you, be honest to yourselves. Choose a path, stick to it. Choose a style, stick to it. एक आजकल डिजाइन में एक स्टाइल है eclectic. Ridiculous style. That is no style. That is a fraction. That is not a style. तुम्हें डिसाइड नहीं हो रहा कि तुम क्या हो, तो तुम इधर भी हो रह जाओ और उधर भी हो जाओ, ये सही नहीं। और अगर ऐसा ही है, तुम्हारा कंस्ट्रक्ट ही ऐसा है, तो भी हम क्या कर सकते हैं? तो लो, इसी में भगवान को पाना, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। ये भी वहीं जा रहा है, इसमें टाइम लगेगा। तुम आधे पौने किसी भी तरह से आधे पिताजी की पूरी सर्विस दे रहे हो, और आधे पिताजी की 0 से -0 व्हाटएवर -15 सर्विस दे रहे हो, तो फिर वो टाइम लगेगा। वो 4-5 लाइफ टाइम के बाद तुम ठीक से पिता बन पाओगे। करेक्ट? या योगा प्रैक्टिशनर, या daughter or son or sister or brother or whatever it is that you're doing, right? It doesn't matter, or even a worker or a socialite, whatever it is. It just takes many lifetimes to get there. And my job is to tell you how to reduce the number of lifetimes, right? So I'm constantly telling you, please live it up 110%. No matter what you're doing, do it 110%. I have never asked you to drop something. There is no judgment. जो भी उठा लिया उसको 110% पूरा करके दो। अगर तुमने काम करना है तो काम भी ऐसे करो कि 5 ऑफर सामने रहे। और अगर योगा करना है तो योगा भी ऐसे करो, क्या फर्क पड़ता है, एक भी स्टूडेंट ना हो, योगा क्लास चलेगी। और अगर फ्रैक्शन में हो तो एस्पायर करो कि किसी टाइम पे ये होल हो जाए, बस। फ्रैक्शन भी गलत नहीं है, उसको भी हम जज नहीं कर रहे, भगवान ने उतनी क्षमता दी है। आज भगवान ने इतना ही करने दिया, दिस इज ऑल्सो फाइन।
But there is a certain measure of perfection in everything. And I want you to meet that. That's it. And if you can't, also, there is no judgment. But I will continuously prod you to reach that. Nudge you, please reach that. जैसे छोटे बच्चे अगर किसी के हों, या हम जब छोटे थे, है ना, माँ बाप देख रहे हैं, पूरी पढ़ाई कर ली 110%, एक चैप्टर आपने 5 बार पढ़ लिया यूनिट टेस्ट के लिए। रिमेम्बर यूनिट टेस्ट? तो यूनिट टेस्ट के लिए आपने 5 बार एक चैप्टर पढ़ लिया, उससे ज्यादा पढ़ क्या सकते हो? याद हो गया आपको, सब हो गया। अब उसके बाद मार्क्स नहीं आते, तो तुम्हारी प्रॉब्लम है क्या? अब वो तो फंडामेंटल जैसा भगवान ने कंस्ट्रक्ट दिया है, उससे यही निकल के आ रहा है कि हमें 40% मिले, तो ठीक है, संतोष कर लो फिर 40% में। 5 बार भी पढ़ लिया, उसके बाद भी 40 ही आ रहे हैं, तो ठीक है। Make sense? Does that make sense? You cannot fault yourself for getting 40%. That's what God gave you. You have to work with that. But I can always encourage you to read it at least 5 times. Make sure you're doing your very best. Be present, be there, attend all the classes, right? Make sure you do it right. Make sure you get marks? Not necessarily. Make sense? Everybody with me? Khushbu? So, first thing, no judgment. I will not come back to this. No judgment, beta. जब हम भगवान की कहानी भी सुन रहे हैं, तो भी उसमें कोई ऐसा पात्र नहीं है जो सोचो राम जी के पास है, जिसको भगवान का एक भी क्षण मिल गया। हमें मिला क्या? भगवान का एक भी क्षण किसी के पास है, तो वो वंदनीय है, निंदनीय नहीं है। चाहे वो मारीच हो, चाहे सुबाहु हो, चाहे रावण हो, चाहे केकई हो, चाहे मंथरा हो, चाहे कोई भी हो, जिसको भगवान का एक भी क्षण मिल गया, अपनी छोटी बुद्धि से उसको जज ना करे। इस पूरी रामायण में, सिंस रामायण इज द सब्जेक्ट एंड नॉट बेसिक फिलोसफी ऑफ हाउ आई शुड लिव माई लाइफ, इस पूरी रामायण में एक भी कैरेक्टर नहीं है जिसको आप कुदृष्टि से देख सकते। कोई कैरेक्टर ऐसा नहीं। जब रामायण पढ़ें, तब इसीलिए तुलसीदास जी से अच्छा कोई रामायण लिखने वाला नहीं। क्यों? क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने सबसे पहले ही बोला, सारे दुष्टों की वंदना, सारे राक्षसों की वंदना, जो कुदृष्टि देते हैं उनकी भी वंदना, उनको भी बार बार नमन है। याद है? रिमेम्बर वी डिस्कस दिस। उनकी वंदना में वंदना आती है इन सबकी। उससे हमें ये समझ में आना चाहिए कि इस पूरी रामायण में नंदनीय कोई भी नहीं है। निंदा मतलब जिसकी हम क्रिटिसिज्म करें। निंदा मतलब क्रिटिसिज्म। सो निंदनीय कोई भी नहीं है, सभी वंदनीय। There is not one character that you can pick out and say this is a bad character. You should not do this. अरे जो भी किया उसने परफेक्ट किया, भगवान से तो मिला। तुम्हें मिलने आ रहे भगवान। कोई ऐसा आचरण नहीं है, किसी का आचरण ऐसा नहीं है जिसको आप उंगली उठा के बोलो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सब भगवान से मिले हुए हैं, सबको वैसा ही होना चाहिए जैसे वो है।
नहीं होते वैसे तो भगवान से नहीं मिलते थे। और ऐसा कोई आचरण नहीं है जिसको आप देख के ये बोलो कि ऐसा होने से ही भगवान मिलेंगे। ऐसा भी कोई कैरेक्टर नहीं है। So this is not a book or a study of how to live your life, how to be a perfect person in terms of judgments. These are benchmarks of conversation, benchmarks of attitude, benchmarks of respect, benchmarks. These are benchmarks, but they are not judgments in any which way. क्योंकि हर कोई जो भी कैरेक्टर है उसका निगेशन है। किस बहुत ब्यूटीफुली रिटन है। कोई भी कैरेक्टर है उसका निगेशन है। लक्ष्मण जी ने एक काम किया तो भरत जी ने उसको निगेट कर दिया। भरत जी ने जो काम किया उसको शत्रुघ्न भैया ने निगेट कर दिया। जैसी एक एक उन्होंने बताई ना, एक परिभाषा बनाई कि ऐसे रहना चाहिए, भगवान की सेवा ऐसे करनी चाहिए। लक्ष्मण जी ने एक सेवा बताई, है ना, तो भरत जी ने दूसरी सेवा बताई, फिर शत्रुघ्न भैया ने तीसरी सेवा बताई, फिर हनुमान जी ने चौथी सेवा बताई, सुग्रीव ने भी सेवा बताई, विभीषण ने भी सेवा बताई। हर कोई भी परफेक्ट नहीं है। इतने सारे एग्जाम्पल कैसे भी कर लो सेवा, समझे? एक तरीके से अगर आप सोचोगे तो ये बेंचमार्क है। और इसके काफी एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं रामायण। बहुत सारे। भाई कैसा होना चाहिए, कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं। कोई सही गलत नहीं है। बाली जैसा भाई भी हो सकता है, सुग्रीव जैसा भाई भी हो सकता है, कुंभकर्ण जैसा भाई भी हो सकता है, विभीषण जैसा भाई भी हो सकता है, भरत जैसा भाई भी हो सकता है, लक्ष्मण जैसा भाई। कितने सारे एग्जाम्पल्स, कितनी वैरायटी है। आप भाई कैसे भी बन जाओ, कैसे भी भाई। इसमें से किसी तरह का भी भाई बनोगे तो आपकी मुक्ति तो हो ही रही है ना। विभीषण इंश्योर्ड रखे कुंभकर्ण और रावण की मुक्ति हो जाए। रावण इंश्योर्ड कि उसने विभीषण को बाहर फेंक दिया तो विभीषण की मुक्ति हो गई। सुग्रीव ने बोला बाली को मार दो, बाली की मुक्ति हो गई। बाली नहीं होता तो सुग्रीव भगवान की लाइफ में ही नहीं आते। भरत ने एक तरह से सेवा की, लक्ष्मण जी ने अलग तरीके से सेवा की। तो भाई कैसा होना चाहिए? इतने सारे एग्जांपल्स, कोई भी उठा लो बेटा, जजमेंट नहीं है इसमें। और हर तरीके से अगर हम वैसा भाई बनना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? यू डिसाइड विच ब्रदर यू आर। तो उसका एपिटम दिया हुआ है। इतनी सारी कहानियां हैं, इतनी। दोस्त बनना चाहते हैं तो कैसे दोस्त होने चाहिए, दुश्मन बनना चाहते हैं तो कैसे दुश्मन होने चाहिए, उसके भी बड़े एग्जांपल्स हैं। So you're not locked into one certain way of life. Nobody is saying that you become भरत जैसा भाई और लक्ष्मण जैसा भाई। कोई तो जरूरत नहीं है तुम्हें भाई की सेवा करने की। तुम विभीषण जैसे भाई भी बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं। Does that make sense? Everybody with me? There is no judgment, guys. There is really no judgment in this entire epic. The one thing you need to learn is there is no judgment. There is no one right way of being or playing a certain role. But whatever it is that you play it to the end. सुग्रीव डरा रहा पूरे टाइम। डर, अगर आपको डर लगता है तो सुग्रीव को पकड़ लो। इतना बढ़िया एग्जाम्पल है। वो डरता ही था, अपने भाई से भी डरता था, फिर राम जी से भी डर गया, फिर उसको रावण से भी डर लगा। सारे टाइम डर ही डर।
उसके डर की वजह से वो पार हो गया। तो अगर किसी को डर लगता है तो सुग्रीव का एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। Just saying, you pick any character, and that is the benchmark of but that kind of person. That is why it is so beautiful. But there is no judgment. ये नहीं बोल सकते हम कि ये सही है कि ये गलत। आप ये नहीं बोल सकते कि विभीषण ने अपने भाई का नुकसान किया, नहीं किया। या सुग्रीव ने अपने भाई को मरवा दिया, नहीं मरवाया, उसको मुक्ति दिलवाई, भगवान से मिला दिया। Does that make sense? Everybody with me? Let's, even for our lives, when I tell you कि ऐसे रहना चाहिए या वैसे रहना चाहिए, I don't want you to think कि there is a certain code that you have to follow. You have full freedom, and that is a gift of Sanatan Dharma. ये जो हमारा धर्म है ना, मैं धर्म प्रोपोगेट नहीं कर रही हूँ, पर सनातन धर्म में यही एक चीज कॉमन है सारे में, फ्रीडम है आपको। You have full freedom. Be who you want to be. सनातन धर्म में ही अश्वमेध यज्ञ हुए ना। करो करो, तुम पृथ्वी कॉन्कर करो, एक बार नहीं 50 बार करो, किसने मना किया है? करो। You have full freedom. Be who you want to be. Do what you want to do. At least be true to whatever it is that you're choosing to be and choosing to do. उतना ही। Take a stock again, think about it again, and then stick to it. That's what I will definitely propose that I want to teach you. That's the teaching moment. Whatever it is that you decide, you stick to it. Whatever be your reasons. तुमने डिसाइड किया अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाया है, स्टिक टू इट, डू इट। तुमने डिसाइड किया योगा करना है, स्टिक टू इट, डू इट। तुमने डिसाइड किया बहुत अच्छा फर्नीचर चाहिए, तो स्टिक टू इट, ब्लडी डू इट। Don't be stuck with eclectic as your style. That's something I don't believe that I can continue to, support. Don't do it half-hearted. Don't do a half-ass job of anything. Do it fully. You want to enjoy your holiday? Sit down. Don't do anything. Binge. इतने सारे शोज हैं, कोई एक लेके बिंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 100% हॉलीडे करो। Nobody is judging you. Whatever you've decided to be, just be that 110%. Nobody telling you this is good also, this is wrong, this is right. कोई नहीं बोल रहा। और परफेक्शन परसू करते 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 भगवान तक मिल ही जाओ, उसमें कोई डाउट नहीं है मुझे। फ्रैक्शन परसू करोगे तो ठेंगा भी नहीं मिलेगा। So my job is not to tell you aspire or don't aspire. हालांकि हमारी संस्कृति बोलती है अगर आप संतोष में रहेंगे तो आपका जो बेंचमार्क है वो tangible हो जाएगा। See what I'm saying? If you stay in contentment, your benchmark becomes tangible. There is no end to greed. You can be like that, but there is no end to it. So your benchmark keeps moving. It's a moving target, and it's very hard to achieve it. Does that make sense? Do you guys understand what I'm saying? So that's why
हम बोलते हैं ये अच्छा है, उसमें भी अच्छा कुछ नहीं है, इट्स जस्ट दैट इट इज मोर अचीवेबल। इसकी डेफिनेशन ये नहीं है कि ऑस्पिशियस एंड इनऑस्पिशियस, नो नो नॉट एट ऑल, जस्ट अचीवेबल नॉट अचीवेबल। जजमेंट सिर्फ इस चीज का है कि ये अचीवेबल है कि नहीं, बस इतना। डज दैट मेक सेंस? या हम लोग सब बुद्धिजीवी लोग हो, समझ में आ ही गया होगा। So the whole conversation about contentment and then desire and contentment and desire and contentment and desire is just this much, that if you continue to pursue desire, there will be so much that you will need to achieve. To pursue that path is very hard. So the smaller you make your goal, the better. Keep it very simple. तो भक्तों ने क्या कहा, हमारा तो गोल इतना छोटा सा है कि सिर्फ भगवान खुश रहे। इतना छोटा बना दिया उन्होंने गोल, तो अचीव हो ही जाता है। तो भक्त अपने गोल मैटर से हटा के कॉन्शियसनेस में भगवान के साथ जोड़ के और बिल्कुल छोटे बना देते हैं, अपने गोल्स ही छोटे हैं, कुछ चाहिए ही नहीं हमें, सिर्फ इतना। तो जब ये गोल छोटे होंगे तो अचीव करना आसान हो जाएगा। जब गोल बड़े होंगे कि वो अदनान स्वामी वाला ना गाना, ये भी चाहिए वो भी चाहिए वो भी चाहिए, वो भी उसमें भी पूरा हो जाएगा, मगर दैट्स अ मूविंग टारगेट, यू विल नेवर बी एबल टू गेट देयर, यू नो। इफ यू से सीएफओ, तो सीएफओ क्यों लिमिट है, सीईओ क्यों नहीं? फिर सीईओ क्यों लिमिट है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्यों नहीं? फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्यों लिमिट है, फिर 4 कंपनी क्यों नहीं? तो जिस तुम प्रेसिडेंट डायरेक्टर की पोजीशन में हो, उसी में रहना स्वीकार कर लो ना, अपना गोल ही डिफरेंट कर लो। अगर फाइनेंशियल गोल रखोगे तो उसका तो कोई एंड ही नहीं है, तो जब गोल डिफरेंट हो जाएगा तो ये गोल नहीं रहेगा। Does that answer your question, बेटा? हाँ तान्या, थोड़ा कि उसकी कोई लिमिट नहीं है। मैंने गोल बनाया कि इतना गोल्ड मेरे पास होना चाहिए, शेयरिंग अ पर्सनल एग्जांपल, और आई सरपास दैट गोल। उससे मेरे पास कुछ ग्राम्स गोल्ड ज्यादा आ गया, वो मिल ही नहीं रहा, गुम हो गया। मैंने गोल बनाया था, भगवान ने उसकी इतनी अच्छी प्रोटेक्शन करी कि वो उससे ऊपर का जितना गोल्ड है वो सारा गायब है। कि भाई ये कहीं ग्रीड में आगे और ज्यादा ना करे, तो इसको यहाँ ही समझा दो कि इससे ऊपर चाहिए ही नहीं। जब तुमने गोल बनाया उसको ऑनेस्टली पूरा पूरा कर लिया, अब उसको ठीक, चलो आगे चलो, लुक फॉर समथिंग एल्स, डू समथिंग एल्स। I'm just sharing an example. So whatever it is that you want to do, make a tangible goal, है ना। जब किसी ने अगर बिजनेस पढ़ा होगा, कहीं कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की क्लास करे, स्मार्ट गोल्स, स्पेसिफिक, measurable, attainable, tangible, yeah, something like that.
realizable or something like that. Smart goals. You should always have smart goals. So सबसे छोटे goals जो हैं और सबसे अचीवेबल गोल्स जो यही है कि भगवान, हम ये सब छोड़ के, ये पूरी माया छोड़ के अगर भगवान के साथ जुड़ जाएं तो वो गोल परफेक्ट है, वो अचीवेबल है, वो हो सकता है, इसका तो कोई एंड ही नहीं है। और बिना भगवान के तो हम फंस फंस जाएंगे इसमें, ये तो भंवर है। इफ गॉड डजंट पुट अ स्टॉप टू इट, इज देयर एनी स्टॉप टू ग्रीड? इज देयर एनी ceiling to greed? No. So जैसे पुलकित बोल रहा था ना, भगवान ने नहीं दिया, कुछ चीज हमारे करने पे भी नहीं हो रही है, तो हमें उसको डेफिनेटली एक हार्ड स्टॉप मान के आगे चलना चाहिए। इट्स ओके, फाइन, एक्सेप्टेड एज अ ब्लेसिंग, एक्सेप्टेड एज अ प्रेजेंस ऑफ गॉड, नॉट एब्सेंस, accepted as the presence of God, as the manifestation of God, not absence. Hopefully, Piyush will be able to give us a succinct recap of this class next time also, right? I'll try my best, Didi. Any questions? Anyone? No. I keep telling people to drop judgment. There is no judgment. There is no right way. There is no wrong way. There is a pleasant way. There is a way which takes you towards consciousness instead of matter, which is unending. There is a way to keep it beautiful rather than make it ugly and stressful. So always choose for yourself whatever it is that you want to do and then stick to it. Don't be a fraction. But even if you are, there is no right and wrong there. There was a point in my life when I said, I do not want to work for the corporate world. But if you're not strong enough to take that decision, that's fine. Nobody's judging you. हाँ शिवांगी बोलो। Didi, I wanted to ask you that you said we should not be touched by, like, we should not leave a trace. We should not let our presence be felt. But isn't that what we're like? Everyone in the world right now is only doing that, whether it's by any means, money, or by like having that kind of an aura, or just like somehow or the other, everyone just wants their presence to be felt. And when we are living this kind of a extravagant life, we are already making our presence being felt. So I'm confused about this part. बेटा कोशिश तो कर सकते हैं ना, क्योंकि जहां जहां यू मेक योर प्रेजेंस फेल्ट, वहां वहां कर्म बन जाता है। आपने कॉन्शियसली किया हो कि सबकॉन्शियसली किया हो कि जो भी, वहां वहां कर्म बन जाता है। एग्जाम्पल देती हूँ, और ये मैंने शायद पहले भी दिया हुआ एग्जाम्पल से ना, से you go into a very posh locality and you see, कौन सी रोड है पीयूष? अमृता शेरगिल मार्ग, you know, our favorite road in Delhi, Amrita Shergill Marg. मतलब हम Amrita Shergill Marg is aspirational for any Delhiite. Not any Delhiites, any South Delhiite. अब हम अमृता शेरगिल मार्ग पे गए और हमने घर देखे,
तो वो जिसने घर बनाया उसकी क्या इंटेंशन थी? कि तो रहने की इंटेंशन थी। उसकी आपको जेलस करने की इंटेंशन थी क्या? थिंक अबाउट इट शिवांगी। उसकी इंटेंशन ये No, नहीं not. नहीं Hmm. नहीं ठीक है, हर कोई बंदा जो साउथ दिल्ली का है जो उस रोड से निकलता है वो आपका घर देख के और जेलस हो, उसकी इंटेंशन थी क्या ये? I mean, some people, I think they must be thinking like that, but I'm sure primarily the idea was to have a good house, whatever they visioned for themselves and their family to live in. Correct. But see how much that house is affecting how many people? Right. How many people is it affecting? And it, so सोचो साउथ दिल्ली की population, सेंट्रल दिल्ली की population, and how many times this entire population passes through that one road. Now multiply. कितना कर्म बना इस बंदे का? But this is unintentional. We should not be ideally affected by it, right? Of course you are affected by it. How can you not be affected by it? इसलिए बोलते हैं, इसलिए हमारे संस्कार हमें बताते हैं कि कम कम दिखावा मत कर, छोटे में खुश रहो, तुम्हारी जितनी जरूरत है उतनी लो, किसी की नजर ना पड़े उसमें। नजर लोग लगाते नहीं है, तुम ऐसे बन जाते हो कि नजर लगती है। But then again, if you, मतलब And the ठीक है, excuse अगर cannot be आपका, that everybody is doing it. hmm, That cannot be you cannot hide behind that excuse. You choose how you want to be. You choose the pitfalls of being like that. hmm, When you are out there and erecting your house in such a coveted space, you know everybody is going to be jealous. You chose that, then you will have to live with the consequences. How can you say that that shouldn't happen, that shouldn't affect you? If you're flaunting your child in front of a childless couple, are they not going to be affected? they will be. And do you think you will not acquire karma because of that? You didn't do anything, you just showed up with your baby. What could you do? Now think So again. you're stuck And in the circle now. There's no out of this because कुछ भी करो तो you are someone or the other will do this. correct. And चाहे your house is at Amrita Shergill Marg or not there, it is still bigger for some people. It's always going to So the be bigger for number is some people. smaller, the number is smaller, the number is smaller, the exposure is smaller. जितना छोटा अपना फुटप्रिंट रखोगे उतना छोटा एक्सपोजर होगा बेटा, है ना? उतना कम कर्म बनेगा। इसलिए हमारे संस्कार बोलते हैं कि छोटा रखो। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें ये बोला जा रहा है कि तुम मत करो। इसका मतलब ये भी नहीं है कि दूसरे कर रहे हैं तो इसलिए तुम्हें लाइसेंस मिल गया कि तुम भी करो। तुम अपने लिए खुद डिसीजन लो। If you're sitting in front of 5 people who you know are having a bad marriage, you cannot mollycoddle next to your husband, right? Hmm. Or talk about romantic gestures that he does for you or whatever. It's going to piss those 5 people off completely. They're going to have a fight at their home the moment they get back home. This person is able to do that much. You don't take any time for, you know the charade, right? Yeah. So how do you go to a party and not create that kind of backlash for yourself? That's something to deeply think about. Be very sensitive to the people around you. And जब हम रामचरितमानस पढ़ते हैं तो हमें इसका अंदाजा रहता है कि कैसे किस जगह पे कैसे बिहेव करना है, Hmm. जिससे कि हमारा फुटप्रिंट बहुत कम हो, लोगों को बहुत कम कष्ट हो हमारी वजह से। वी नीड टू रिड्यूस द see, I am wearing jewelry all the time. How many of you are jealous that I'm wearing jewelry? Raise your hand. I can't see everybody's hand. Raise your digital hands.
Yeah. How come me wearing something is not affecting you? Or in a different context, it would affect you, right? So if, say, supposing there is a very, very big mandir, you're not thinking कि इतना बड़ा मंदिर इनके पास कितना पैसा होगा. तुम सोचते हो क्या मंदिर है ना? तुम सोच रहे क्या उसके बारे में? तुम कर्म बना रहे हो क्या? तो कर्म लिमिटेड कर सकते हैं ना बेटा हम. एक ही चीज का कर्म लिमिट कर सकते हैं ना. हम अपना एक्सपोजर कम कर सकते हैं बेटा. ये बोल रही थी मैं. होटल रूम में भी जाओ तो गंदा मत छोड़ के आओ. कम करो उसको. दूसरे आदमी को काम ना करना पड़े तुम्हारे लिए. साफ रखो. हम अपने घर में मेड लगाते हैं. मेड सारा गंदगी साफ करती है. लगातार उसको बोल. तो मेड भी रखो, मगर मेड को भी काम ना करना पड़े. अपना काम तो खुद कर लो. मुझे बहुत आपत्ति है ये सारे फ्यूडलिस्टिक लोग. पानी लाके दो, चाय लाके दो, खाना. अरे उठ के जाके पानी पी लो. जब उतनी तो तुम्हारी क्षमता है, जाके पानी ले आओ. उसके लिए तुम साले बटन दबा रहे हो, घंटी दबा रहे हो, आवाज लगा रहे हो. बंदा उठ के आएगा. एक कितना आपने कर्म क्रिएट किया इतनी सी चीज के लिए. एक पानी के गिलास के लिए कितना कर्म हो जाता है. So being thoughtful around your actions, being very circumspect, constantly bearing in mind what the other person is going through while you're doing this, and how much karmic baggage is that going to create for yourself, is a very wonderful way to live. Very consciously you're living. It's fine. You can wear your beautiful dress, you can have a beautiful house, but you have to make sure कि फिर वो मंदिर लगे और फिर वो गुरु की फोटोग्राफ लगे कि अच्छा इसमें तो थोड़ा और आभूषण होता तो अच्छा लगता. कम क्यों? है ना? भगवान की शादी पिक्चर देखी कभी? वो तो अच्छी तरह से सज धज के आते हैं. पर उसपे नजर लगती है क्या भगवान के पास मुकुट है, भगवान के पास कुंडल है, भगवान के पास हार है? उसमें तो नजर नहीं लगती हमारी. तो या तो आप अपना कंडक्ट ऐसे रखो कि आपको नजर ना लगे. और दूसरा, जब भी कहीं ऐसी जगह पर जो आपसे परिचित नहीं है लोग, when you don't know those people, then be very careful. You should not leave any scarring. No scarring should happen to other people. And if at all you're giving them scarring, it should be conscious. कि अब ठीक है, अब तान्या को ठीक करना. उसको हर 4 महीने में डांट पड़ती है अच्छी तरह से. पीयूष को भी पड़ती है, मोनिका को भी पड़ती है. लाइक वो ठीक है. वो दैट इज कॉन्शियस scarring that we are doing on purpose. इनका बोझा तो जन्म जन्म से ढोते आ रहे हैं. अगले जन्म में भी ढोना पड़ेगा. तो ठीक है, थोड़ा इसी जन्म में ठीक हो जाओ. Does that make sense, everybody? So definitely the idea should be that you do not leave a footprint. And there'll always be people who will be jealous. There'll always be people who create karma. But the number of those people can be limited by the way you conduct yourself. And one way of doing it is by conducting yourself with humility and with a lot of a lack of pomp and show. Thank you. Any other question, beta? Again, that's not my prescription. I am not saying one way is right or wrong. Just saying the outcomes of those paths that we choose to follow will be one or the other. If you decide on your own that being simple and humble and low profile is a good idea, good.
But if you feel you can't live like that, that's also fine. Then you have to change your conduct. You have to change the way people look at you. Then you have to compensate for it with your Vani and your Okay. All right, guys. I think too much for you guys to chew on. We'll come back next week. But at least you have understood, hopefully, that there should not be any judgment. There are no right or wrong characters. They're all characters of God. Right? And only somebody who can understand this completely can write Ramayana. And that's why Tulsidas ji is such a perfect author. Beautiful, perfect author. He has zero judgment. सबकी वंदना की उन्होंने. कौन कौन वंदनीय? सब वंदनीय. Right, guys? Have a nice week. I'll see you next week and have a lovely year. Namaste. Namaste, Didi. Namaste. Jai Shri.